why do we expect this from Modi? आप कोई और डेमोक्रेसी देख लो, इसमें क्या बाइडेन ने अपना सक्सेसर नॉमिनेट करके रखा था? नहीं। कमला ने नॉमिनेट किया है? नहीं। क्या ब्रिटेन में होता है? नहीं। क्या जर्मनी में होता है? इनको तो 15 साल हो जाएंगे ना। नहीं, that doesn't matter. You see, the leader is chosen by the people. Modi in 2014 had coined this term, greater compliance by companies and loosening of the licensing raj. Is he successful in doing that? As a person who runs a company, yes, to a great extent. In my, for an MSME, absolutely, I do feel that. However, there's so much complication in other matters. मास्क उतारो जी, सीजन 2 में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज दो मेरे फेवरेट जने हैं जिनको मैं हर बारी अपने साथ बुलाती हूँ क्योंकि मुझे इनके साथ डिस्कशन बहुत अच्छी लगती है। दे वर ऑल्सो वेरी पॉपुलर एंड यू ऑल लव देम। इट्स अभिजीत एंड नंदिनी, नंदिनी एंड अभिजीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नमस्ते। नमस्ते। आज मैंने इनको इसलिए बुलाया बिकॉज मैं अपने बच्चों के फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर रही थी और मैं उनसे पूछ रही थी कि आप लोग जब बैठते हो तो डू यू डिस्कस एनीथिंग, लाइक डू यू डिस्कस पॉलिटिक्स? सो दे सेड वी डू। एंड मैंने कहा आप क्या डिस्कस करते हो? इसे वी डिस्कस द शेयर मार्केट, द इकोनॉमी, जनरली क्लिनलीनेस एंड दैट्स व्हाट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड देन दे सेड बट एवरीथिंग इन द एंड हम कहाँ जाके आ जाते हैं? मिस्टर मोदी पे, बिकॉज दे हैव सो मेनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम कि वो कुछ भी बात करो तो वो आ जाता है मोदी जी क्या कर रहे हैं और मोदी जी क्या नहीं कर रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन है मेरा, आपसे पूछती हूँ फिर आप जवाब देना। द क्वेश्चंस दोज बॉयज हैव गिवन मी is that is Modi 3.0 a weaker government pursuant to which we are seeing that the domestic agenda is put on hold? The PM is focusing on foreign policy. Given that they are weaker at home, they don't want to rock the boat at home on key domestic issues. Is this true? I don't think Modi's personality goes with anything on the back burner. I think everything happens simultaneously. We might not know about it. It might be kept a little subdued, but I don't think anything is put on the back burner. They're not looking complacent. I now look at it very differently over the last few weeks. There's a lot happening in the world globally. From last year, October, from 7th of October, we've been on this every day something. There's the American election taking place. There's been 2 assassination attempts on their, candidate, presidential candidate. So much has been, taking place. And I think it's happening so that we concentrate there. And meanwhile, a lot of things which were done with a lot of flamboyance in Modi 1 and 2 are now going to be done in a different way. I have that. I'll tell you why. How did I come to this conclusion? You see Yogi Adityanath, he is in Jammu for the election campaign. Usually we would have seen Modi all over the Kashmir campaign, There seems to be let the states and these 2-3 very popular CMs go out and do what they have to do. And let the states handle it and Modi will take a step back. It's all probably it is all with his blessings. But I think they are going to handle it very differently this time. That's my way of looking at things. And you, Abhijit? I think they're finding their feet क्योंकि Modi has never had a minority government before. गुजरात में भी उनका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होते रहता था, सेंटर में भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी था। इस बार कोalition का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, but not of the party. But one thing I've learnt is never underestimate Modi. वो crouching tiger, hidden dragon होता है ना, उसकी तरह है। You never know dragon कब suddenly निकलेगा। मैं क्यों बताता हूँ? पहले टर्म में जो पहला यूपीए एनडीए 1 था उसमें कुछ भी नहीं हुआ, और फिर यूपीए 2 सॉरी एनडीए 2 में धड़ाधड़ होने इमीडिएटली आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड, राम मंदिर बना, इतने सारे रिफॉर्म्स हुए, जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड, यूपीआई बिकेम अ रियलिटी दैट इज आजकल अब कैश बोलोगे तो हिंदुस्तान में लाइक
once I went off abroad without taking my cards or cash, because you know I'm so used to बस हर चीज एक ही इसमें है करके. True. You know, and I was like, shit, like, what am I going to do? So, you know, it's like that. You have to be very, treat Modi, if you're taking Modi for granted, best of luck to you. You're in for a surprise. He's still got tricks up his sleeve. तो होने दो, you know, I think जब सबसे ज़्यादा complacent होगा opposition तभी मोदी strike करेगा, ठीक है? He hasn't won, and remember, he still won this election. It's a victory that feels like a defeat, but the defeated they think they're victors. Yes. And third term too is like a very big Huge. thing. Historic. And 240 you look at seats. all the other conservative leaders, they've not been able to get a third term at all. Yes. So it's मैं नहीं मानता हूँ अभी you know the wounds are being licked. Still, it's been more than 100 days now. That doesn't matter. See, you have to plan. 5 years. You have to regroup. You have to set a clear path. So we'll see what happens. So we have our Andhbhakt with us. इसको कुछ गलत नहीं दिखता है. इसको ये तो totally like Modi, Modi, Modi. No, actually, Payal, no, not at all. When you know people say trust him blindly, you have these people who write on. That scares me. I don't trust anybody blindly. Anybody. Not blindly, but yeah, the moment we say something, you do come like, you know. I feel there's a reason for everything. I find I don't give up on my relationship so easily. I whatever, personal, professional, I feel you always have to, if it's a capable person who's proved himself over and over again, true. I don't give up so easily. You know, so it's all very easy to jump on when the bandwagon is, you know, it's all gung-ho. Exactly. I think you've got to sort of also have some patience when the going is not so good. I've got some very interesting questions, like the way they were talking about Mr. Modi. So मैं कहा चलो इसी में frame करते चलो हैं. पूछ लो मेरे को. भूख लग रही ये है. कर रहा है. From 2014 to 2024, we saw the entire Sangh Parivar aligning with Mr. Modi and his agenda and personality. Now that he's not come with the full majority, do you see the RSS pushing back and making life difficult for the BJP? Not difficult, I believe it's more accountable. Because देखिए बीजेपी और कांग्रेस में बहुत बड़ा फ़र्क है. कांग्रेस में जब आपके राजकुमार हारते रहेंगे, उनको जब वो 40 सीट ले आते हैं, अरे आप तो विष्णु के 10वें अवतार हैं. जब वो 50 सीट ले आते हैं, अरे आप तो बुद्धा मैत्रेय हैं. जब आप 99 सीट ले आएंगे, mind you, these are the 3 worst performances of the Congress historically ever in its entire history. That's repeatedly. Andhbhakt. and 99 सीट पे अरे आप तो यीशु मसीह के दूसरे the return of यीशु मसीह है, ठीक है? That is Andhbhakti. इधर you are held to account, and I think RSS course correction कर रहा है. They're insisting on course correction and they're holding everybody accountable for it. That's a very good thing. That is to be applauded. क्योंकि कांग्रेस में तो ये सब होता नहीं है. जो चापलूस होते हैं उन्हीं को मिलते रहता है हर चीज. कोर्स करेक्शन तो होना ही है ना. If you've got an absolute majority twice and you've come down to a very significant but not absolute majority, तो कोर्स करेक्शन तो करना ही पड़ेगा ना. Yeah, I agree with that, and I also think that both of them need each other. You know, the BJP without the RSS and the RSS also without the BJP. They need each other, and they might have had their egos and their turf wars and their accountability or whatever. But I think the fact that they must have reassessed the situation, I think it will only be for the better. So I don't think any pushback, anything. I think, you know, how a long-term relationship needs revaluing, reassessing. I think that's the point they are at. Or maybe BJP and RSS first time they've got so much of power. Yes. So maybe, you know, they're not You've able got to take handle it a new and, situation. You know, so learn they're how not used to it. Yeah, That's maybe. it. Okay. You read history and you can identify that all strong leaders and dynasties' downfall was due to one key issue, which is at time having yes men in fighting when the principal leader does not lay out a
clear succession plan. Do you think Mr. Modi should lay out a clear succession plan as who after him? As what you may say about the Congress, they are stuck on the Gandhi family, right or wrong. They know, the Congress knows who their next leader is. Yeah, Nandini? I think there would be something in the offing. I don't think this is a long-term player, long-term vision. You know, this man, from what we've seen in the first 2 terms, I thought he must have spent his entire life preparing for this. The way the things just rolled out, the way they happened, there is great thought given. So I don't expect that no thought has been given to this. It won't lead to infighting. मेरे को बनना है, मेरे को बनना है. वो who knows? Maybe it will, but I think that he would have something in laid out that it would be an easy succession plan. देखिए, why do we expect this from Modi? आप कोई और डेमोक्रेसी देख लो, इसमें क्या बाइडेन ने अपना सक्सेसर नॉमिनेट करके रखा था? नहीं. कमला ने नॉमिनेट किया है? नहीं. क्या ब्रिटेन में होता है? नहीं. क्या जर्मनी में होता है? इनको नहीं. तो 15 साल हो जाएंगे नहीं, ना. that doesn't matter. You see, the leader is chosen by the people, and first chosen by the party and then validated by the people. You understand? It isn't उनका खानदान का जायदाद नहीं है कि मेरा बेटा बनेगा, फिर मेरा पोता बनेगा, फिर मेरा गोल्डन रिट्रीवर बनेगा. ऐसे नहीं चलता है, समझ रहे हो ना? ये वो मिडिल ईस्टर्न शेखडम में चलता होगा, इधर नहीं चलता है ये सब. But Abhijit, this is not a family member that he's going to choose the most capable person to take over. He also may not choose. Yes, he might leave it to the party. He'll leave it to the party. Infighting नहीं होगी. वो तो होगा. Well, हर पार्टी में होता है यार. Infighting, see, you have to make a difference between infighting and competition. जब कोई कंपनी का सीईओ रिटायर करना पड़ता है, when the board wants to choose the next CEO, सबको इनवाइट करते हैं to apply for it and many people apply. अंदर से भी अप्लाई करते हैं, बाहर से भी अप्लाई करते हैं, और फिर मेरिट्स पे चूज किया जाता है उसको. How is that infighting? Let the best man win. Yeah. If he is able to cobble together the greatest coalition within the party, he should get it. No, वही तो demonstration of skill है कि भाई मैं सबसे ज्यादा पार्टी लोगों को अपने साथ ले जा सकता हूँ ना. अगर for example, अगर suppose tomorrow Modi chooses me to head the party. No. We'll come down to 1 seat. कोई अपना बच्चा देगा मेरे को, no, अगर कोई मोदी को बच्चा देगा, he might not like the kid, but he'll say, अरे बच्चा ये कैसे हो गया, कितना अगली है तुम्हारा, ये पॉटी मशीन है, ये निकालो मेरे से, इतना बदबू आ रहे हैं, और सब उधर हर right then and there 20 lakh votes gone. So you have to take people along. You have to be a builder. Okay, with an aggressive China, and unpredictable and bankrupt Pakistan, and non-friendly government in Bangladesh, with Mr. Modi at the center, with a fractured mandate, how majority Modi-led government impacts his non-majority Modi-led government impacts his agenda with negotiations with our neighbors. And also लंबे टेढ़े क्वेश्चन काय का पूछ रहे हो? आसानी से पूछो ना. पूरा वर्ड फॉर वर्ड काय का लिखा है, समराइज करो. मैं ये कह रही हूँ कि हमारे बेसिकली आपने ये पूछा है कि हमारे नेबर सब दुश्मन बने जा रहे हैं एक के बाद एक. मोदी जब माइनॉरिटी गवर्नमेंट में है, क्या ठीक से डील कर पाएगा? नेबर्स के साथ डील कैसे करेगा? तो वो आसानी से पूछो ना. ये क्या ये निकाल देना इंटरव्यू से. नहीं, ये रखो इसमें. अगर ये नहीं आएगा, मैं फिर से इस प्रोग्राम में नहीं आऊंगा. तो इसमें क्या है? I was being, कि बड़ा सोबर सा इंटरव्यू करेंगे, बट विद अभिजीत you can't do this. सोबर. ओके, चल आंसर दे. सोबर. अरे नहीं, थोड़ा इंटेलिजेंट टाइप. बहन तूने क्या भांग पी रखी है? सो इसमें क्या होता है, देखो सीधी सी बात है. ये मेक्सिको के एक प्रेसिडेंट थे, बेनितो हुआरेस. वो बोलते रहते थे कि मेक्सिको की दुर्भाग्य है कि वो भगवान से इतना दूर है और अमेरिका के इतना पास है. ये सब जो छोटे छोटे देश होते हैं ना, वो कभी भी अपने दुर्भाग्य को अपना नहीं मानते हैं, किसी और पे ब्लेम कर देते हैं. इंदिरा गांधी भी जब घर पे कुछ होता था, वो हमेशा फॉरेन फोर्सेस हिडन हैंड करके बोलते रहती थी. शी वाज रेफरिंग टू द CIA और अमेरिका और व्हाटएवर. So देखिए, अब there are some countries, शेख हसीना refused to do that. Okay,
बट आप देख लो, ये जो भी देश होते हैं वो हमेशा हर 3, 4 या 5 साल पलटते रहते हैं, प्रो इंडिया एंटी इंडिया, प्रो इंडिया एंटी इंडिया करके। तो अभी हो रहा है दे आर नॉट गोइंग टू रिमेन एंटी इंडिया। आप देखो मोहम्मद मुइज़ू लास्ट साल जो बोल रहा था, अब कितना कल उसने माफ़ी भी मांगी है, कल या परसों, कि ये जो मेरे कैबिनेट मेंबर्स ने बोला था ये बोलना नहीं चाहिए इलेक्शंस था। आ रहे हैं क्या? रुको यार, लेट मी फिनिश। ये बोलना नहीं चाहिए था, और उनके खिलाफ मैंने इमीडिएटली एक्शन लिया, और इंडिया स्टार्टेड गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स अगेन। वो कैंपेन चला रहा था इंडिया आउट, और अब हमारा फिर से इंडिया इन हो गया है। ठीक है, ठीक है, टॉयलेट का ये मिला है कॉन्ट्रैक्ट, बट दे डिडंट वांट टू गिव द चाइनीज द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर आप एडिस अबाबा, इथियोपियन एयरलाइंस अभी कभी फ्लाई करोगे ना, एडिस अबाबा एयरपोर्ट देखोगे, बाहर से इतना सुंदर लगता है, पर उसमें चाइनीज़ ने बिल्ड किया था। कंस्ट्रक्शन के बाद उनको पता लगा कि एक भी टॉयलेट नहीं था उसमें। तो दोनों साइड में बड़ा सा छेद बनाया और उसमें पोर्टा कैबिन टॉयलेट लगाया। ठीक है, और वो पोर्टा कैबिन टॉयलेट भी कैसा था, उसमें कारपेट लगा हुआ था, तो जब चलोगे ना, स्क्विश 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 स्क्विश, पता नहीं क्या सब होता था उधर। ठीक है, तो दे क्लियरली डिडंट वांट टू गिव द कॉन्ट्रैक्ट्स टू द चाइनीज। या अगर आप शियान रेलवे स्टेशन में उतरोगे, द हाई स्पीड रेलवे स्टेशन फ्रॉम बीजिंग, उसमें यू आर लुकिंग एट इट सेइंग ये तो एयरपोर्ट की तरह बना है भाई, सिंगापुर चांगी से भी सुंदर है, टिल यू गो टू द बाथरूम, द बाथरूम्स आर फिल्थियर देन रेलवे टॉयलेट्स आउट हियर। आई कुडंट इवन गो इन देयर, क्योंकि उसमें सुसु 1-2 इंच में पूरा इस पे भरा हुआ था। ठीक है, सो द चाइनीज आर नॉट गिवन टॉयलेट कॉन्ट्रैक्ट्स एट ऑल, बट we're back, they're not insisting on any more military disengagement or anything like that, right? श्रीलंका में भी देखो, श्रीलंका में थोड़ा एंटी इंडिया फीलिंग था, पर अब कोई भी एंटी इंडिया फीलिंग नहीं, क्योंकि जब वो गए तब चाइना ने उनकी मदद नहीं की, हमने ही उनकी मदद की। अब देखिए, अभी मोहम्मद यूनिस भी आके ना थोड़े देख लीजिए, अगर वो लास्ट भी करते हैं 6 महीने से ऊपर, बिकॉज देर इन सीरियस इकोनॉमिक डिक्लाइन, आके मोदी के चरण पे चुम्मा देंगे, देखते रहिए। So you mean they're all irritants at one point and then they turn and they flip and things always ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो गिरिजा प्रसाद कोइराला थे, जो मनीषा कोइराला के मामा या ऐसे चाचा या मामा थे, वो बोलते थे कि देखिए, नेपाल के साइड में 2 कुत्ते हैं, जो हमारे उत्तर में जो कुत्ता है वो भौंकता नहीं है, वो काटता है, और जो हमारे दक्षिण में जो कुत्ता है वो काटता नहीं है पर बहुत भौंकता है। not a very this thing, but yes, India is not seen as a threat. They're shit scared of China. Okay, but they find it much easier. ये यार, घर में भी जब बच्चे होते हैं, वो कभी भी मास्टर जी के पास नहीं होते, क्योंकि मास्टर जी से डरते हैं, पर घर में एक दिन मम्मी आई लव यू मम्मी, मम्मी यू हेट मी, तुम मेरा जिंदगी तबाह करना चाहती हो, फिर अगले दिन मम्मी यू लव मी मम्मी, ऐसे होता है यार। It's like that. It's a much more. I won't take it so, you know. I'm exaggerating a bit. No, I mean, I don't want the mummy analogy in it, because they don't consider us mummies. नहीं. They're more vicious than we would be with हम सौतेले मौसी हैं। बिल्कुल ऐसे, you know. So like we have this Aadhaar card, it's a IT document. हमारी आइडेंटिफिकेशन उससे है, सब चीज़ें बहुत प्रोसेस, सारी चीज़ें बहुत आसानी से हमारी पूरी हो जाती हैं आधार कार्ड के कारण, but it's being misused. What is Mr. Modi doing about it? I don't know. I'm sure there have steps been taken or not, but I don't know. Yes, It's being misused. of course it is. Yeah, but you tell me one thing that isn't misused. Passports, there are fake passports all the time. There is no ID card. passports से तो अमेरिका फिर में भी जाके आप देखो फंसने लग कितना जाओगे। social security number fraud होता है and this and that. ID cards everywhere are fake. Are you justifying it? No, not at all. But it's a reality. But it happens everywhere. Anything can be faked, boss. Currency notes fake होते हैं. तो ये कंट्रोल नहीं होगा. You have to limit it. You can never completely eliminate it, but you limit it. Modi in 2014 had coined this term, greater compliance by companies and loosening of the licensing raj. Is he successful in doing that? As a person who runs a company, yes, to a great extent. In my, for an MSME, absolutely, I do feel that. However, there's so much complication in other matters. Everything is, during COVID, I realized
that a simple memo or an advisory by our babus is never simple. It's never. And the system seems to be like one big paradise now at the moment, especially all that is demanded of you, wanted of you, asked of you is just never ending. So I find that part of it very stressful in running a business. And it doesn't seem things have got simpler, which I would have expected. I think it's all getting more and more complicated in the most bureaucratic rigmarole manner that depletes you of energy to think of something better, bigger, and have some, vision for your business. The intent is good, the execution is terrible. And when you give Babu something simple to write, they try to make it as complicated as humanly possible. The language needs 10 lawyers, and they do it precisely so that compliance guys can take bribes and run this whole rentier system that they run. This love that Modi has for bureaucrats, it is my one big complaint with him. It really needs to go, because Indian bureaucrats जो हैं, Indian administrative service नहीं है, Indian asshole service है. And it's certainly not the steel framework. It's a Maggi noodle. ये लोग जो हैं स्कूल में बिजनेस इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन नहीं पढ़ते हैं, वो शेक्सपियर की तरह जो सीधे सीधे बोलना होता है वो ऐसे करके बोलते हैं, और इनको लगता है यही अच्छा इंग्लिश है. It is very bad for compliance. Okay? And फाइन, आजकल आप वो रिमोट फेसलेस असेसमेंट कर रहे हो, पर उसी फेसलेस असेसमेंट में हर टैक्स ऑफिसर को लगता है ही कैन गेट अवे विद इट, बिकॉज उसके लिए कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस, करियर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है फॉर गेटिंग इट रॉन्ग. जीरो अकाउंटेबिलिटी. द वन थिंग दिस गवर्नमेंट नीड्स टू डू, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर आप अकाउंटेबिलिटी ले आओ. हायर एंड फायर ब्यूरोक्रेट्स. So there's judicial reform, police reform, and a complete overhaul of the bureaucratic system. Because you look at Nirmala Sitharaman, who's the finance minister, जब बोलती है सीधा सीधा जो है, सीधा आसान सा इंग्लिश में, आसान से हिंदी में, आसान से तमिल में बोल देती हैं. But then why are all the orders coming out of the ministry so complicated? Because how much is she going to do? It's the bureaucrats writing the nonsense down. जो क्रीम बन वाले ने कोयम्बतूर में कंप्लेन किया था, अन्नपूर्णा स्वीट्स वाला, सच्ची तो बोल रहा था. अरे उसके भी पहले मेरे को पता है, ये एवरग्रीन स्वीट्स है ना हमारे इसमें, वो बेचारा मेरे को बोल रहा था, सर मैं ये गुलाब जामुन पे अलग जीएसटी है, और जो गुलाब जामुन पे जो मैं सिल्वर वर्क लगाता हूँ उस पे अलग जीएसटी है. अब मैं या गुलाब जामुन बेचूंगा या इस सब का जीएसटी कैलकुलेशन करूंगा. I have that in my handle and a lock is different. A lock has a different GST. The handle by itself has a different GST, and when you combine it it's a completely ये हमारा यूसुफ उंजा वाला है ना, जो डिफेंस वाला है, वो होम फिटिंग्स का दुकान चलाता है. ये जीएसटी वाले ने आके बोला कि जो उसका जो सबसे सस्ता प्रोडक्ट था वो विलेजेस में बिकता है, वो प्लास्टिक का टैप है जिसपे गोल्ड वो लगाया गया है, वो gold work. Okay. I mean, सस्ता है. Yeah. Golden color. Coated. And it's like 30-40 rupees or something like that. ठीक है? पर लगता है बाहर गोल्ड की तरह वो पुराने कॉपर टैप्स होते थे ना, not, I mean, those look sophisticated these days, but उसकी तरह. He came and insisted on the highest GST tab for it because it's gold. प्लास्टिक का टैप है. और हर बार हियरिंग के लिए उसको 4-5 घंटे मणिपाल ड्राइव करना पड़ता है, जो उसका क्लोजेस्ट ट्राइब्यूनल है सुनवाई करने के लिए. ठीक है? एंड माइंड यू, देयर आर नो कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द जीएसटी गाय हुज कम एंड डन दिस. उसका कम से कम 3 महीने का सीनियरिटी कम करो. अरे there's so many hundreds and thousands of them who's you keeping think a इससे track. करप्शन बढ़ रहा है? करप्शन नहीं बढ़ रहा है, एक्सटॉर्शन बढ़ रहा है. And inefficiency. एंड सिवियर इनएफिशिएंसी. जो चमन चूतिए हैं वो आजकल समझते हैं कि वो वेद कोविड विद्वान है. पहले बस आईएएस ऑफिसर समझा किया करते थे, आजकल ये 2 कौड़ी के जो जीएसटी टैक्स वाले हैं वो भी अपने आप को ये समझने लग गए. Okay, last 2 questions. One, you tell me who after Modi? Both of you.
Whom do you want? Will be good for the country. I think collectively they will choose somebody quite incompetent like JP Nadda or something. Don't tell me. Nahi. No. Who incidentally got a promotion even after he screwed up right royally. Yeah. Really? JP Nadda? You think people are going to vote for him? So, you know, कई बार क्या होता है कि पावरफुल लोगों को बाहर रखने के लिए सभी नमूने के लिए वोट करते हैं. But this is with Modi leaving. With Modi, but after Modi won't nominate him. No, but Abhijit, what a contrast! Like where Modi ji and where Nadda? Then you're signing your own death warrant. Do they want that? They've tasted power. Maybe they know that what sells now is not these incompetent. Maybe they are so confident they'll come back to power. Do you think so? After this last debacle? It's still 240 and the closest other party was 99. Right. So almost a what? 2.5 is to 1. Or maybe they're not going to declare Nadda as PM candidate. बाद में जीत जाएंगे तब बना तब देख लेंगे पता नहीं क्या होगा. नहीं. I don't know. I think that they will name somebody. I don't know who. That I don't know. But I think. But not Amit Shah. He wants to, but I don't think so. I don't know if he has the organizational control required. देखिए मोदी कब चुने गए थे? 2013. Advani tried very hard to keep him out. Yeah. पहले जब वाजपेयी उनको निकालना चाहते थे, Advani was his biggest supporter. But then Advani, even after losing the 2009 election, wanted to run a second campaign. Yes. And then the party realized कि it's do or die now. Yes. इनको निकाल के मोदी को लाया गया. पर जब तक एक critical situation नहीं है, तब तक they won't go in for the best candidate. The best candidates will always be polarizing candidates. Always. जो सबसे अगर आप ये मार्गरेट थैचर बोलती थी ना, consensus is when people collectively agree to do something that none of them believe in. Very true. So this is the problem with consensus. Yes. जो निर्णय लेता है उसके हमेशा दुश्मन होते हैं. Yes. अगर उसके दुश्मन नहीं होते हैं वो एक नालायक है जिसने जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं किया. That is a fact. That is a fact. What about Yogi? Nandini? I don't know whether it's going to be Yogi, whether it's going to be Himanta. I don't know myself, and I don't know who I'd want. I want Himanta. You want Himanta? I want Himanta. Yes. But people are expecting कि Yogi ji होंगे. But no, not everybody. I have no clue who will be. I don't know who I would like to see. But one thing I want to see is over the next 2 years, that person, whoever it will be, will show up. His face will come up before the election. Because we will see that person more in the forefront, we will see something about him. Then we can decide yes or no, we like him, we don't like him, we are against it or not. Okay. But otherwise, last question. Best cabinet minister, the Modi government? A couple, I would say. चलो दो दे दो, not more than two. I would say the external affairs minister. For whatever reason. I know there are lots of people who say that, you know. How well she knows me. Let's just put it. I told you, Andhbhakts. I think he's a very good minister. He's very effective, impactful. And in some ways, I would say even Rajnath Singh. I would, you know. Even I like think Mr. Rajnath Singh. There are two you asked me. Yeah. तूने मुझे दो ही बताने और क्रिटिसाइज किसी को नहीं करना है. यार अगर दो ही बताने हैं, I would say Nitin Gadkari and Hardeep Puri. I'll tell you why. Hardeep Puri did a fantastic job with the Central Vista project and everything. Yes, yeah. And Nitin Gadkari has worked wonders with our roads. And तीसरा अगर बताना है, I know it isn't very popular, I would say Nirmala Sitharaman, because remember every other country was collapsing after COVID. Yeah. I don't think she gets the credit she deserves. Because for that. Abhijit, उसको कोई clarify करने भी नहीं आता है from the IT cell or So from. if you ask me four, then I would add Nirmala Sitharaman and Gadkari in the list. Nice. Okay. Thank you so much. तू बहुत सर खाता है, फिर भी मैं तेरे को बुलाती हूँ. Thank you. मेरे को ही बोल रहा है चुप कर, मेरा ही
पॉडकास्ट। मैंने चुप कर नहीं बोला, तेरे को हिंदी भी समझ में नहीं आती है। मैंने क्या बोला, पूरा ये लिख लिख के शेक्सपियर की तरह पढ़े जा रही है। मैंने इतनी मेहनत करके screech of the nightingale on the soft whisper of the night and where forth bloweth the whale's trumpet. नमस्कार जी, थैंक यू, एंड हो गया Thank you. पॉडकास्ट का। प्लीज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।